Hello friends, I'm Aryan. Welcome to SciLink Online Education Channel. Today our topic is how to search for journals approved by UGC in UGC Care List. ओके इस लिस्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए एंड वेबसाइट मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन कर रखी है। आप इस वेबसाइट को नोट कर सकते हो। ओके इसे नोट करने के बाद आप यू जस्ट गो टू द क्रोम एंड ओपन गूगल and here you search for, you just copy and paste UGC in website. You can easily type www.ugccare.uni then pune.ac.in. okay, so you type there. So here the website is this page is open, then you click on login this side. Okay, you will just click on login to care list. When you click on it, you just see this page. okay, here you just you आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यूजर आईडी मेंशन कर रखी है और पासवर्ड मैंने इंसर्ट कर रखा है। यदि आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है वेबसाइट पर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर दिख रहा होगा रजिस्टर हेयर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा रजिस्टर हेयर। ओके, यहाँ पर क्लिक करने जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो इसके बाद आपको एक पेज ओपन होता है जहाँ पर एक फॉर्म आपको देखने को मिलता है। राइट, तो आपको ये सारा फॉर्म आपको ऊपर फिल करना होगा। ओके, हम देख लेते हैं वन बाई वन क्या क्या स्टेप पर फिल करने हैं। पहला ऑप्शन आप यहाँ पे दिया हुआ है टाइटल। इन टाइटल यू जस्ट इफ डॉक्टर, प्रोफेसर, मिस्टर, मिसिस, मिस या मिस, इसमें आपको जो भी आपका जो टाइटल है वो आप सिलेक्ट करके ओके मिस्टर, नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टर ही होंगे। एंड आफ्टर दैट इंटर योर ईमेल आईडी। ओके, रेस्ट योर verified email ID. Okay, then go first, then click on this option and write your name, type your name, and here you type your password here. Okay, and then you click on this part and enter your last name, that means surname, and after that you just click on confirm password. Okay, after confirm password you click on this portion gender. Okay, then enter your mobile number and this captcha enter there, right? And address for correspondence, so here you mention your office address or yeah your home address. Okay, right? Then when you fill this complete form, then click on submit button. Okay, after submission uh, you are registered. Okay, you are registered and एक email you will get on your email ID, and after that you just click on this portion login part. Okay, when you just click on this login part like that, and this display is open. Okay, so you just easily write your user ID and password. Okay, and then click here I am not a robot. Okay, then click this clicking part, so it's verified that you are not a robot, and then you just simply click login. Okay, तो ये पेज आपको देखने को मिलेगा, right? And after that you just select portion there and choose according to your preference what you are searching for. Suppose I am searching for subject, I am searching for approved journals for MTech mechanical, so I go to subject. Okay, here I mention engineering field only. If you write mechanical engineering, then there is no journal will be display, so just write simple engineering field. Okay, engineering, then go to search. Okay, now this page is open. Here is the list of total 42 journals list there which are approved by UGC.
तो आप लोग किसी भी जर्नल्स में अपने पेपर को, थीसिस को पब्लिश करा सकते हो, ठीक है। यहाँ वो देखने को मिलेगा आपको जर्नल टाइटल, शेयर नंबर, टाइटल्स, पब्लिशर, ओके, ISS नंबर, EISS नंबर, एक्शन, ओके। For your GK, ISSN, the full form of this term is International Standard Serial Number, ओके। तो ये एक नंबर होता है जिसके जो आपको मेंशन होता है आपके पेपर के ऊपर, राइट। सपोज here we take example like suppose we go to next session there, part click to second part. Here we see, yeah, this is Springer, yeah, International Journal of Advance in Engineering Science and Applied Mathematics, okay. So Springer, this is the ISN number, EISS number, this is the action. If you click on the action there view, just click on it. Here a page display, just describe about this journal, okay. There's one title there, publication language English, publisher is Springer, there is name, there is ESS number, there is display, okay. Subject is engineering all. That means all the engineer from different branch like electrical, mechanical, civil, automobile, all students can be publish their research paper on this journal, right? Okay. So this is the process how to check, how to find out the list of UGC care list, okay friends. If you're looking for different subject, you can change your subject, like from where we enter engineering now, you can change the subject. You can enter your different subject like social science, like only science, like mathematics. So you can change the subject, then go for search, okay. I hope you understand all the process how to search this channel. Thank you friends watching this video. Thanks friends watching this video. Please subscribe the channel, like and share with your friends, okay. Thank you.